Hi students. So today is my first class on decoding calculus. Super important, and today in this class we'll learn how to visualize calculus. ये calculus आया कहाँ से? Calculus का purpose क्या है? When do we use calculus? How do we use calculus? Right? Is all that we are going to learn in this very interesting epic master course on decoding calculus. Okay? Chalo, let us begin. And by the way, happy Sunday to all of you. Chalo. So in this course, we are going to introduce the calculus, then we'll do differential calculus, integral calculus, and we will also learn application of calculus in physics, right? And if you're in class 10th or class 11th, it is very, very important for all of you. अगर आप class 12th या 13th में हो, droppers में हो, then refreshing why do we use calculus and when do we use calculus? इंटीग्रल कब यूज करना है, डिफरेंशियल कब यूज करना है, समझ में आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज माय टुडेज फर्स्ट क्लास, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस. टुडे वी विल नॉट गो वेरी डीप इनटू कैलकुलेशंस, बट वी विल विजुअलाइज calculus. Okay, and by the way, if you guys have not seen the success stories of Sumit, Chirag and Nivedya is coming soon. All these are all India top 1000 rankers in IIT. ठीक है, do watch that on Vedantu JEE channel, and if you have not subscribed, do subscribe to Vedantu JEE channel by pressing on the bell icon so that you keep getting the notifications. And in my class, if you are understanding the concepts, do click on the like button as well. That is my feedback. ठीक है, हर क्लास के बाद after every class I look at the likes and see how much could you understand, and I try to make myself better for you guys. Okay, chalo. Now guys, let us start with a very interesting question. In today's class we'll do lots of thought experiments. हम खूब सारी चीजों को सोचेंगे and कोशिश करेंगे समझने की कि कैलकुलस उसमें यूज कैसे हो रहा है. So imagine you are on an aeroplane and suddenly you got to know कि यार आपके जो एरोप्लेन का अल्टीट्यूड मीटर है ना, अल्टीमीटर, जिसके ऊपर एल्टीट्यूड दिखता है एरोप्लेन का, हाइट अबव द ग्राउंड, इट इज रीडिंग ओनली 100 फीट. शुड यू बी वरिड? शुड यू बी वरिड? इज द प्लेन गोइंग टू क्रैश? हो क्या रहा है? इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ फॉर यू टू बी वरिड? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? द एल्टीट्यूड मीटर शोज 100 फीट अबव द ग्राउंड. Now there can be two scenarios possible. What are those two scenarios? Maybe your aeroplane is going up, or maybe the aeroplane is going down. If the reading in the altitude meter was 100 feet above the ground, agar 100 feet thi reading and the aeroplane was going up, no need to worry. But agar aeroplane नीचे जा रहा है, then there is a need to worry. You might crash. हो सकता है aeroplane crash हो जाए. Already 100 feet की reading है, नीचे जा रहा है, you might crash. But is this information enough? इस केस को छोड़ दो, ये तो अच्छा केस है. Let's look at this case when the aeroplane is going down. Still two scenarios are possible. What are the two scenarios? Maybe your altitude is decreasing, but that is decreasing very, very slowly. You're going down, but very, very slowly. Maybe the pilot is readying the aeroplane to land. हो सकता है कि पायलट एरोप्लेन को लैंड करने की कोशिश कर रहा है. द एरोप्लेन is at 100 feet above the ground but going down slowly. No need to worry. Pilot experienced है, land कर लेगा. ठीक है. But if the aeroplane is losing the altitude very, very fast, maybe you are about to crash. खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो. I hope it never happens with any one of you, with anyone in the world. But now there was a need to worry. So guys, are you going up? Are you going down? If you're going up, at what rate are you going up? Slowly or fast? If you're going down, at what rate are you going down? Slowly or fast? Now this rate of change is what led to the development of calculus. This world is dynamic. This world is changing every time all around us. The world is changing at different rates. Global warming हो रही है. At what rate is this global warming happening? Is it alarming? Will the world cease to exist soon? At what rate is the earth warming up? Rate of change is very important for us to understand. Okay.
our pure water, drinking water resources are depleting. At what rate are they depleting? Is the rate of depletion, जिस रेट पे पानी खत्म हो रहा है पीने वाला, is that alarming? So everywhere around we see the need to understand the rate of change. और rate of change को समझने का तरीका है calculus. This is that mathematical way to understand the rate of change in the world. Okay? But ये आया कैसे? इसको derive कैसे किया? क्या आप खुद derive कर सकते हो? So Newton and Leibniz, some hundreds of years back, actually came up with this mathematical way of understanding the rate of change. तो क्या आप न्यूटन बन सकते हो? चलो अपन न्यूटन तो नहीं बनते, बट आज अपन वेदन बन जाते हैं. टुडे वी विल बिकम वेदन एंड डू सम थॉट एक्सपेरिमेंट्स टू योरसेल्फ डिराइव कैलकुलस. ठीक है? सो कैलकुलस इज अबाउट मेजरिंग and describing the change as we talked about it. Okay, with time we will learn all these possible graphs as well. Graph going up, increasing graph, decreasing graph. ये भी decreasing है, but one is decreasing slowly, one is decreasing fast. There is a change in direction. So all these things we will learn through graph as well. Calculus, the rate of change. Okay, so guys, today let us start by doing a thought experiment to understand two parts of calculus. One is differential calculus, which talks about the rate of change, but then there is integral calculus, which talks about adding those small changes to create a big change. कैसे? चलो देखते हैं. Imagine करो आज के thought experiment में, imagine न्यूटन आपका दोस्त है. पता नहीं आपको दोस्त लगता है कि नहीं. आई एम श्योर आप में से कई लोग न्यूटन को गाली देते होंगे, पता नहीं क्या क्या बना के चला गया, हमें पढ़ना पड़ता है. वी हैव टू स्टडी सो मच दैट ही हैज इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड. एनीवेज, फॉर टुडेज थॉट एक्सपेरिमेंट, न्यूटन इज योर फ्रेंड. ठीक है? एंड यू आर अ वेदन, यू आर अ प्राउड वेदन. एनी स्टूडेंट ऑफ वेदांतु इज वेदन. सो ऑल ऑफ यू टुडे आर वेदन एंड लेट्स डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट. थॉट एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों? न्यूटन भाग रहा है. न्यूटन इज रनिंग from point A to some point B. आपको ये फाइंड करना है what is the distance traveled by Newton. इस न्यूटन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. but what you cannot do, you cannot take a measuring tape and measure the distance traveled. ना, आपको यहीं पे खड़ा होना है. You have to stand far away from where the Newton is running. ठीक है? You still have to calculate the distance traveled by Newton. ठीक है? सो ये रहा न्यूटन, आप हो वेदन. तो सडनली आपके दिमाग में एक आइडिया आया, यार अगर कोई मुझे इक्विपमेंट दे दे. कौन सा इक्विपमेंट? इफ समवन गिव्स यू दीज इक्विपमेंट्स. क्या इक्विपमेंट दे दे? मान लो आपको एक कैमरा दे देता हूं. ठीक है? और मान लो न्यूटन के हेड पे एक स्पीडोमीटर फिट कर देता हूं. सो व्हेनेवर द न्यूटन, सो व्हेन द न्यूटन इज रनिंग, एवरी टाइम द स्पीड ऑफ द न्यूटन at that time will be visible here on the speedometer. वो कार में स्पीडोमीटर होता है ना, वो मैंने न्यूटन के सर पे लगा दिया और आपको एक कैमरा दे दिया और आपको बोला कि कैलकुलेट करो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय न्यूटन एज ही इज रनिंग. तो कर सकते हैं कैलकुलेट. इस थॉट एक्सपेरिमेंट से आप खुद डिराइव करोगे कैलकुलस, बोथ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल. सो एक्सपेरिमेंट क्लियर है? न्यूटन इज रनिंग, उसके हेड पे स्पीडोमीटर है which shows the speed of the Newton at any given time. You have a camera, you can click the photos. चलो तो फोटो खींचते हैं. So आपने क्या किया? You started clicking the photo. So imagine this is a very primitive camera. ये थोड़े पुराने जमाने का कैमरा है. ठीक है? ये फोटो खींचता है थोड़ी थोड़ी देर में, खटक 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 खटक. So imagine the gap between every two photos is delta t. So आपने पहली फोटो खींची. So when Newton was running, you clicked so many photos. So the first photo was clicked at the time t1, the second photo at t2, t3, t4 and t5. In each photo, you can see the speed of Newton as he was running. दिख रहा है? हर एक फोटो के बीच में गैप कितना होगा? मान लो 2 सेकंड का गैप है. खटक खटक खटक. ठीक है? सो बिटवीन एवरी टू फोटोज देयर इज अ गैप ऑफ 2 सेकंड, क्योंकि बहुत ही पुराने जमाने का कैमरा है ना. इट्स अ वेरी ओल्ड कैमरा. इमेजिन. ठीक है? सो दिस इज द इंफॉर्मेशन यू हैव.
Now with this information बच्चों, can you calculate the distance traveled by Newton? क्योंकि आपको फॉर्मूला आता है. What is the formula that you know? All of you know the formula that distance traveled is given by velocity into time. Right? The distance traveled is given by velocity into time. But याद रखो ये क्या था? Imagine करो किसी की स्पीड थी 5 किलोमीटर्स पर आवर और वो भाग रहा था फॉर 2 आवर्स. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाता है? 10 किलोमीटर्स. डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाता है? 10 किलोमीटर्स. ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूला. बट यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. The problem with this formula is I can apply this formula only when the velocity remains constant. तो मैं क्या करता हूं? Now using this information, what I do, I apply the formula. What is the formula that I apply? Photo 1, photo 2, photo 3, photo 4, photo 5. Right? So what did I see? I realized that यार ये जो 2 सेकंड का गैप है ना, the gap of these 2 seconds between this photo and this photo, I don't have information between the 2 photos. मुझे पता ही नहीं बीच में क्या हुआ. एक्चुअली वेलोसिटी v1 से v2 के बीच में चेंज हुई होगी. व्हेन द न्यूटन वाज रनिंग द वेलोसिटी मस्ट हैव चेंज्ड फ्रॉम v1 टू v2. बट मेरे पास इंफॉर्मेशन है नहीं. आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन. आई जस्ट हैव इंफॉर्मेशन बिटवीन टाइम दिस एंड टाइम दिस. ये वेलोसिटी v1 थी, फिर v2 हो गई. बीच में अज्यूम करना पड़ेगा. वी विल हैव टू अज्यूम दैट बिटवीन दीज 2 फोटोज, मान लो उसकी वेलोसिटी v1 ही थी. Let me assume that the velocity between photo 1 and photo 2 is v1. So the distance traveled can be calculated as velocity into delta t, the gap between the 2 photos. क्या दे देगा आपको? This delta s1 distance. Similarly delta s2 distance कितना हो जाएगा? v2 velocity. Assume between this time to this time the velocity remain constant, which is the wrong assumption by the way. This is the wrong assumption. So delta s2, delta s3, delta s4. If I add all these, what will I get? The distance traveled. But will that distance traveled be accurate? No, ये तो accurate होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि आपने assumption लिया है. You have taken assumption that the velocity remain constant between v1 and v2, या between this time and this time. But ऐसा नहीं था. The velocity continuously changed. But क्या करें? कैमरा ही बेकार है. Between 2 photos, I don't have information. तो चलो, let's do the calculation. So when you calculated, you got this. This is what you got. So delta s, distance traveled by Newton, आपकी calculation के हिसाब से, as per your calculation, delta s1 plus delta s2 plus delta s3 plus delta s4, which is v1 delta t, v1, v2, v3, v4 delta t's. Delta t can be taken as common. Can I write the summation of v1, v2, v3, v4 as sigma? Sigma sign पता है सबको? Sigma मतलब summation. When you write sigma v, it means summation of the velocities. Okay? But the problem is the answer is approximate. इसको गुस्सा आ गया वेदन को. वो मारने जा रहा है कैमरा को. It is going to hit the camera. Because बाद में जाके जब उसने measuring tape से measure किया ना, तो उसका जो आंसर आया और जो exact distance travel था वो same ही नहीं आया. क्योंकि उसने assumption लिए थे, because he had taken so many assumptions. तो उसने बोला अरे कैमरा ही खराब है. What if I get a better camera? What if I get a better camera? चलो, now Vedan got a better camera. Now what is better camera? Now it will click the photos very fast. खिचक 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 खिचक. पहले फोटोज कैसे खींच रहा था? खिचक खिचक खिचक. 2-2 सेकंड का गैप था. अब कैमरा इज बेटर. Now the camera clicks photos very fast. खचक 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 खचक. Now he has got more information. अब इसको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई. ठीक है. Now gap between 2 photos has reduced. पहले 2 सेकंड का गैप था. Now the gap between 2 photos has become half a second. Now gap between 2 photos has become half a second. Now if he does the same calculation, will the answer be more closer to the accurate value of the distance traveled? Yes or no? Yes or no? होगा ना? अब जब वो distance calculate करेगा, कैसे distance calculate करेगा? वैसे ही करेगा. v1 into delta t, v2 into delta t, v3 into delta t, v4 into delta t. But now
his assumption that the velocity remains constant between time this and time this is a better assumption. क्यों? क्योंकि gap of time बहुत कम हो गया. Gap between two photons has reduced. So now the answer which he is getting is actually more closer to the exact answer. समझ में आया? ठीक है. तो यहां से धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा है, यार अगर कोई मुझे मूवी कैमरा दे दे, इफ somebody gives me a super fast camera, if somebody gives me a super fast camera almost like a movie camera, ठीक है, तो क्या होगा? Suddenly I will click so many photos that the distance calculated with my way, that is velocity into delta t का summation will become so much more accurate. Now this is how the concept of integration was derived. आपने क्या सोचा? आपने बोला जब कभी velocity थी v, right, the gap between two photos को इतना छोटा कर दिया that we start calling that gap as dt. The gap between two photos is so small that infinitesimally small, like half a second की जगह कितना 0.000000000000001 सेकेंड, इतना छोटा गैप कर दिया आपने. ठीक है, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा ना, वो उस छोटे से डिस्टेंस को हम बोलते हैं ds. उस छोटे से डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम बोलते हैं ds. और ऐसे सभी ds को ऐड करोगे, when you add all these छोटे छोटे डिस्टेंसेस, राइट, तो हम उसको समेशन बोलने की जगह वी स्टार्ट कॉलिंग इट इंटीग्रेशन. और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्चुअली कितना आया है? वेलोसिटी v एट दैट टाइम इनटू डेल्टा t, v dt. सो समेशन ऑफ v dt, राइट, इज एक्चुअली कॉल्ड integration. That's it. Very simple. So it is all about getting a very very fast camera. यही तो integration है. So what is integration, guys? Integration is nothing but summation. आपने खुद ही derive कर लिया. ये लो. Let's see क्या derive किया आपने. Let me summarize the concept for you. The thought experiment was that Newton was running. आपको एक कैमरे से फोटो खींचना था and you had to calculate the distance traveled by Newton. Okay. So what did you realize? You realize that अगर मेरा कैमरा, if my camera is super fast, then the gap between two photos becomes so small. The gap between two photos becomes very very small. The velocity at any given time is v. Then the distance traveled is actually very small distance ds, right? Which is actually equal to what? This is equal to velocity into small time gap dt, very small, like 0.00000000001 second जैसा gap, right? And when you add, previously क्या किया था आपने? When you added lots of velocities with delta t in the, जब आपका कैमरा old था, तो what you were getting? You were getting approximate distance. You were getting approximate distance traveled. But if the time gap becomes very very small, then what you get is accurate distance traveled. Now actually हो तो summation ही रहा है, but when we make the distance with this time gap so small, instead of using sigma, we start using this sign to denote something what we now will start calling as integration. So integration, now Vedan has understood, he is so happy, he has understood that कि भैया integration is nothing but summation. Integration is nothing but summation of small changes, when those changes are calculated over very 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 small time gap. समझ में आया? बस तो मूवी जो चलती है ना, वो इंटीग्रेशन है. So पता है मूवी कैसे चलती है? You have lots of small photos. You have lots of photos. When you run all those photos in the reel very very fast, what do you see? A movie. So integration is nothing but like a movie. सभी small photos को sum कर दो, what you get is integration. Very simple. समझ में आया सबको बच्चों?
Any doubt in this? So guys, pata hai, if you think like this, this is exactly how Newton might have thought. Very simple, and you all can imagine this thought experiment. So this is integration. समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Now let us see how graphically can we understand this integration. वापस से सेम केस को लेते हैं. केस क्या था? आपने न्यूटन की फोटोज खींची. You click the photos of Newton with a very old camera. Imagine this is a velocity time graph. The exact velocity time graph अगर कोई प्लॉट करता ना, तो मान दो ये कर्व आता. It was a curve. It means that velocity is continuously changing and increasing. As time progresses, the velocity increases. ठीक? Now let us see what is this delta S1, delta S2, delta S3 and delta S4. What is delta S1? This distance traveled between two photos. दो फोटोज के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या था? वो था v1 into delta t. तो मान लो ये डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी है. राइट, यहां पे थी वेलोसिटी v1 एट टाइम से t equal to 0. So if you see graphically what is v1 delta t, you will see v1 delta t is nothing but this rectangle. Right, this rectangle. Does that make sense? Now what is v2 delta t, that is delta s2, is यहां पे v2 से एक स्ट्रेट लाइन खींचो. Right, so this is v2, this height is v2, this height is v2, and this is delta t. Oops, sorry. So this height is v2, this is delta t. So area of this rectangle is v2 delta t. Now this is delta t and this is v3. So v3 delta t, this is sigma, this is delta s3 is क्या है? ये वाला area. And v4, this is velocity is v4. So this height is v4, this is delta t. This shaded region is v4 delta t. Right? अब जैसे जैसे मैं delta t को कम करते जाऊंगा with better and better and better camera, your delta t's will keep reducing. Agree? So थोड़ा सा better करते हैं उसको. This was the initial case. थोड़ा सा better camera. The delta t reduced. Right? The shaded region is this. But as we keep decreasing delta t, what will happen? See, this will happen. See if you can visualize. If you keep decreasing delta t, the rectangles will keep getting smaller and smaller and smaller and smaller. Do you realize that the shaded portion will actually become the area under the graph? The shaded region will actually become the area under the graph. As your camera becomes better and better, the calculation, summation of the delta S1, delta S2, delta S3, delta S4, that actually is going to give you the area under the velocity time graph. बस यही तो integration है. This is the geometrical meaning of integration. समझ में आया? So what is the geometrical meaning of integration? The geometrical meaning of integration is area under the graph. Which graph? In the case of, अगर हम distance की बात कर रहे हैं, the area under the velocity time graph. Velocity into time was distance. Integration v dt is the distance if the velocity is changing. हमें ऐसा क्यों करना पड़ा बच्चों? Why did we have to do this? Because हम velocity into time का formula apply नहीं कर पा रहे थे. We were not able to apply the formula velocity into time because velocity was changing continuously. If the velocity Newton was running, his velocity was changing, he was running faster and faster and faster and faster. I could not apply velocity into time for the entire duration. So we reduced the duration. हमने duration को reduce किया, फोटो खींच के खचक 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 खचक. Between two photos, we assumed the velocity to remain constant and applied the formula velocity into delta t. v2 into delta t, v3 into delta t, v4 into delta t added to get the distance traveled. But that was approximate क्योंकि delta t gap ज़्यादा था. Right?
एंड वेलोसिटी इस और इस पॉइंट के बीच में ज्यादा चेंज हुई थी. देन आपने अच्छा कैमरा लिया, यू गॉट अ बेटर कैमरा, यू केप्ट रिड्यूसिंग द डेल्टा टीज, एंड व्हाट यू गॉट आफ्टर द समेशन was better, more accurate distance traveled का result. But when you decrease the distance to dt, when you decrease the time gap to dt, like a movie camera, what you actually got was exact distance, and now the summation with the time gap as dt is known as integration, right? That is what we learnt. So guys, this is the summary of entire integration. Newton भागा, calculate किया with an old camera, with a time gap more, right? So sigma v, summation of velocity into delta t gives you distance traveled but approximate. यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है approximate, okay? This is approximate, right? But जैसे ही आपने इस time gap को reduce कर दिया, एक्चुअली आपके समेशन को, द समेशन को वी नाउ स्टार्ट कॉलिंग एज इंटीग्रेशन, राइट? सो द समेशन ऑफ v dt वी स्टार्ट कॉलिंग इट वेलोसिटी इनटू डेल्टा t को v dt बोलते हैं if the time gap is almost zero, very small, and now that sigma becomes integration, and integration v dt will now give you exact distance traveled. What will it give you? Exact distance traveled. And graphically, as we kept on decreasing the delta t, okay, it actually becomes small dt. This pink bar with that small gap dt is v dt. If you keep adding all these small bars, ठीक है, you will actually cover the entire area under the graph. So what does integration mean? What does integral v dt mean? Area under the graph. So to summarize, so what is integration? So integration can also be understood as area under the graph. Right? So हमने क्या क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा distance traveled can be given as summation of v dt या फिर integral v dt if the velocity keeps on changing. When will we apply this formula? When the velocity keeps on changing. ठीक है? And integration is equal to distance traveled, right? If it is area under the graph, which graph? Velocity time graph. समझ में आ गया? So this is you yourself deriving integration. Clear? Chalo. Now, can we similarly derive differentiation? Chalo, let us see differentiation. But before that, guys, distance time graph को समझना, ये हम आगे और डिस्कस करेंगे. But still, you might have learned, steeper the distance time graph is, higher the velocity. क्योंकि slope ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है? बट ये क्या है? सेम टाइम में मोर डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड, इन द सेम टाइम लेसर डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड. सो यहां पे क्या है? स्पीड मोर, स्पीड लेस, स्पीड कांस्टेंट. अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है? नाउ लेट अस कम टू द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. अब देखो बच्चों, क्या है डिफरेंशिएशन? क्या है डिफरेंशिएशन? से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो इमेजिन न्यूटन वाज रनिंग, इट्स लाइक अ मूवी. अब मूवी में से जैसे कोई एक फ्रेम बाहर निकालोगे ना, इमेजिन अ मूवी वाज रनिंग, सडनली आपने उसमें से एक फ्रेम निकाल के बाहर रख दिया. यू टुक आउट अ फ्रेम, दैट इज वन फोटो. मूवी कैसे बनती है? विथ द रील रनिंग. रील हैज लॉट्स ऑफ नेगेटिव्स. All these negatives like photo, one photo, lots of photos run together creates a movie. Newton running, उसमें से कोई एक फोटो निकाल के बाहर रख दो. If you take out one photo, उसमें जो स्पीडोमीटर में स्पीड दिख रही है ना आपको, the speed that you see in the speedometer in that photo is what we call as instantaneous speed at that given time. Imagine you are driving a car, ठीक है?
and suddenly at 11:45 I call you and ask you, what is your instantaneous speed? What will you say? You will look at the speedometer and say, oh, 62.3 kilometers per hour. That is your instantaneous speed. Speed at that instant. But how do we find it mathematically? Chalo, let us see. समझ में आ गया सबको? What is instantaneous speed? Speed at particular instant, and that is nothing but differentiation. Chalo, let us try to understand. Same experiment. क्या हुआ? न्यूटन भाग रहा था. अब now you know the experiment. Delta S1 is V1 delta T. Delta S2 is V2 delta T. So what is V2? What is V2? V2 is this delta S2 divided by delta T. Right? In simple words, this is the average velocity between this time and this time. Imagine करो, मैं बैंगलोर से मैसूर जा रहा था. I was going from Bangalore to Mysore. Right? A broad example. So I was going from Bangalore to Mysore. मैं चला गया ऐसे. So this is Bangalore, this is Mysore. ठीक है? So मेरी स्पीड तो चेंज होती रही होगी. But imagine what happened. The distance traveled was say 60 kilometers. मान लो जो टाइम लगा, वो टाइम कितना लगा? 1 hour. So मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी इज I actually traveled at 60 kilometers per hour. Right? But was my speed 60 all throughout? नहीं. कभी मेरी स्पीड 60 से ज्यादा भी होगी. At times I might have accelerated to a speed higher than 60. मेरी स्पीड कभी 90 भी होगी, कभी 100 भी होगी, कभी मेरी स्पीड 20 भी होगी, कभी मेरी स्पीड 10 भी होगी. But on an average, my speed between this time gap of 1 hour was 60 kilometers per hour. Similarly, since my camera was so bad, the time gap was significantly high. 2 सेकंड का टाइम गैप था. So in between those 2 seconds, I assumed my velocity to remain constant, but that speed is actually the average speed between this time and this time. That is delta S by delta T. तो ये instantaneous speed, इस पूरे टाइम गैप में मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड पता ही नहीं. आई डोंट नो द इंस्टेंटेनियस स्पीड. ऑल आई नो इज, चलो अज्यूम कर लेते हैं इस एवरेज वेलोसिटी से मैं जा रहा था बिटवीन दिस टाइम एंड दिस टाइम. सो दिस इज डेल्टा S2 by delta T is the average speed between this time gap. राइट? बट मुझे तो चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड. आई तो वांट इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो मैंने टाइम गैप को कम किया. आई रिड्यूस द टाइम गैप. So I click more photos with a better camera. तो अब क्या मिला मुझे? I again got average speed, but on a very smaller time gap. पहले इस पूरे time gap में my speed I assume to remain constant, average speed. Decrease the time gap. In this time gap, now I have the average speed. If I keep decreasing the time gaps, finally, अगर time gap बिल्कुल almost zero हो जाएगा ना, then the speed that you will get by delta S by delta T will actually be almost the instantaneous speed at this given time यहाँ पे, at this time यहाँ पे. कैसे? Let us see. So what did I do? I kept reducing the time gap. मैंने time gap को इतना reduce कर दिया, वही movie camera ले लिया by taking a good camera, that this time gap was so small. 0.000000001 seconds was the time gap. Okay, suppose I know the distance traveled in that time gap. That distance traveled is that small distance traveled ds. Instead of delta S, now I'm calling it ds. Very small time gap. Okay, then if I divide this ds by that small time gap dt, I will actually get the instantaneous speed at this particular time. Rather than getting the average speed, I will actually get the instantaneous speed if this delta T becomes simply very small dt. This is what we call as differentiation. Differentiation is nothing but delta S by delta T. But delta T को छोटा कर दो, जो मिलेगा वो actually एक photo हो जाएगी. What you will get is just a photo at that instant. So clicking a photo is same as differentiation. What is differentiation? Khachak, photo, differentiation. Lots of photos, run it in a
projector, integration, running movie, stop, take a photo out, differentiation, add all these differentiated photos, movie, integration. Do you see how integration and differentiation are related? Right? चलती हुई मूवी को रोक दो, डिफरेंशिएशन, वापस से चला दो, इंटीग्रेशन. बस, so simple, such a simple thought. Okay, so now let's see what this leads to. अगर इसको ग्राफिकली समझेंगे ना, if we understand it graphically, so what happens? तो आपने पता है क्या किया? Now I'm looking at the displacement या distance time graph. कौन सा ग्राफ? पहले कौन सा ग्राफ लिया था? वेलोसिटी टाइम. अब कौन सा ले रहा हूं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इन द वेरी एक्यूरेट वर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. मान लो ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चेंज हो रहा था. द डिस्टेंस वाज चेंजिंग लाइक दिस. एज टाइम वाज इंक्रीजिंग, द मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर डिस्टेंस वाज गेटिंग ट्रेवल्ड, बिकॉज न्यूटन वाज रनिंग फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर. ठीक है, तो ऐसे चला. आपने क्या किया? इस डेल्टा टी गैप को लिया. यू टुक, दिख नहीं रहा, लेट मी राइट इट. This time gap is delta t. This time gap is delta t. Okay. And in this delta t time gap, the distance traveled. This distance traveled is delta s. क्योंकि ये distance है ना यहाँ पे in this. So ये कितना है? Delta s. ये कितना है? Delta t. Okay. Do you see a chord here? Can I make a chord? A straight line. If I connect this point and this point, say point A, point B. ये जो कॉर्ड है ना, ठीक है, स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड ए बी, दिस वी एवरेज इज स्लोप ऑफ कॉर्ड. द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड ए बी इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू एवरेज वेलोसिटी. याद रखना, एवरेज वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. नाउ जैसे जैसे मैं डेल्टा टी को स्मॉल करता जाऊंगा, एज आई कीप रिड्यूसिंग डेल्टा टी, एज आई कीप रिड्यूसिंग दिस गैप डेल्टा टी, दिस ए बी chord will keep reducing, or you can imagine this B point is coming towards A. Can you imagine this B point coming towards A? अगर मैं B को A की तरफ लेके आऊंगा तो what will happen? This delta T will keep reducing. Better camera, better camera, better camera. What will happen? See what will happen. Let us visualize what will happen. See, this point B या Q यहाँ पे is coming closer to P. See how the chord is changing. See how chord is changing. Wow, this chord has actually become the tangent at P. Super awesome. As this gap delta T is reducing, as this gap delta T is reducing to almost a small gap dt, the chord AB is actually converting to tangent at this point P. Super important. Super important. इसको देखो ध्यान से, वापस से देखो. As this point B is moving towards this point, the chord is slowly converting into the tangent at P. देखो ध्यान से. देखा, हो गया टेंजेंट. बस फिर तो मजा आ गया लाइफ में. तो कॉर्ड का स्लोप कितना है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वॉज वॉट? एवरेज वेलोसिटी. जैसे जैसे डेल्टा टी कम हो जाएगा, एज डेल्टा टी रिड्यूसेस टू डी टी, कॉर्ड रिड्यूसेस टू टेंजेंट, स्लोप ऑफ कॉर्ड रिड्यूसेस टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. लो, हो गया डिराइव. हो गया डिराइव. क्या हो गया डिराइव? देखो मैं बताता हूं. पहले क्या था? ये था आपका ग्राफ. ठीक है, ग्राफ में क्या था? देयर वाज अ कॉर्ड. ठीक है, द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, राइट? सो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी was your average velocity, V average. Now this converts into ds by dt, which is nothing but
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कब कन्वर्ट हो जाता है ये? इट कन्वर्ट्स व्हेन द टाइम गैप डेल्टा टी, इट कन्वर्ट्स इनटू वेरी स्मॉल टाइम गैप dt। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। द एवरेज वेलोसिटी कन्वर्ट्स इनटू एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया सबको? राइट, एंड दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सिमिलरली दिस इज द स्लोप ऑफ chord, as the gap reduces, the chord reduces to tangent, so this becomes the slope of the tangent. समझ में आया? समझ में आया? So there was a chord, average velocity, जैसे जैसे गैप कम होता चला गया, chord बन गया tangent, chord became tangent, and the slope of tangent is actually what? Slope of the tangent at t is actually instantaneous velocity, which is equal to ds by dt. Done. हो गया differentiation खत्म. Instantaneous velocity is actually differentiation, and differentiation geometrically is equal to slope of the tangent at that point t, जहां पे आपको कैलकुलेट करना है. सो दिस इज एस टी ग्राफ. ठीक है, दिस इज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट टी. एट द पॉइंट टी कोई आपसे पूछे वेलोसिटी कितनी है, यू विल से द वेलोसिटी इज ds by dt डिफरेंशिएशन विद ज्योमेट्रिकल इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. अगर ये टेंजेंट लाइन ये है, उसका स्लोप अगर ये एंगल थीटा होता तो स्लोप कितना हो जाता? tan थीटा. बस differentiation is nothing but tan theta slope of the tangent. वो समझ में आ गया? डन. चलो, बहुत ही औसम है. सो ये था chord became tangent, slope of the chord average velocity became slope of the tangent instantaneous velocity. Delta s by delta t became ds by dt instantaneous velocity differentiation. Done. तो कर लिया आप लोगों ने, खुद ही डिराइव कर लिया. What's the big deal? You derived everything. So guys, today's class was just a basic class for you to understand the purest way of calculus. Calculus है क्या, आपको बिल्कुल प्योर फर्स्ट प्रिंसिपल से समझने की क्लास थी. अगर ये समझ में आ गया ना तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी बियॉन्ड. क्योंकि कई बच्चे केवल कैलकुलस को दे डू इट यूजिंग फॉर्मूला इन देयर माइंड. एक्चुअली कैलकुलस इज नॉट फॉर्मूला. कैलकुलस इज वे ऑफ थिंकिंग. कैलकुलस इज दैट अंडरस्टैंडिंग that will help you understand the world around you, the dynamic world around you. Okay, so applications in physics. Application in physics क्या होता है? Distance time graph या displacement time graph या position time graph का के ऊपर at any point if you make a tangent, then slope of the tangent is velocity. What is the slope of the tangent? ठीक है, so slope of tangent at any point on ST graph is equal to velocity instantaneous, right? But the slope of the tangent at any point on the velocity time graph, on the VT graph, is actually equal to what? dv by dt, delta v by delta t. Change in velocity upon change in time is acceleration instantaneous. It's acceleration at that given time, the slope of the tangent. ठीक है? And this is also equal to, and this is also equal to ds by dt, that is differentiation of distance with respect to time. And this is also same as writing dv by dt. That is differentiation of velocity with respect to time. In your mind, you are thinking as delta v by delta t, where the gap between the time is almost zero. ठीक?
Clear है सबको ये? So this is the understanding of physics. That's it. Now this is what you have learned till now. हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, क्या क्या समझा हमने पढ़ा calculus has two parts. Differentiation, clicking a photo is differentiation, right? It gives us the slope of the curve geometrically slope of any curve can be found out by differentiation. ठीक? In terms of physics, the slope of distance time graph gives us velocity ds by dt, right? In the case of integration is area under the graph. समझा था ना अपने area under the graph we learned. So area under the velocity time graph gives us the net change, that is the change in the distance. ठीक है? तो net change किससे मिलेगा? इंटीग्रेशन से. एंड रेट ऑफ चेंज किससे मिलेगा? डिफरेंशिएशन से. रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन, टोटल चेंज, फुल मूवी इंटीग्रेशन. पूरी मूवी में चेंज होता है ना. हीरो आया, पहले हीरो जीरो था, फ्रॉम जीरो ही बिकेम हीरो. दिस एंटायर चेंज इज इंटीग्रेशन. ठीक है? बट एनी गिवन टाइम इन बिटवीन, जब वो जीरो से हीरो बन रहा था, व्हेन ही वाज बिकमिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो, somewhere in between he was an average some guy, right? That is differentiation. That photo of him at any given time between his becoming zero to hero is actually differentiation. And add all these photos, पूरी कहानी मिल जाएगी from zero to hero integration. ठीक है? So that is my way of understanding. I hope you could also appreciate. Now guys, in the next class onwards we will learn differentiation. Now we will learn differentiation. ठीक है? We will derive how differentiation has come. इसी क्लास को extend करेंगे next class में. And what we will do in the next class guys is we will start by differentiation. सब revise करेंगे in the next class. And we will do what? We will derive, मैं आपको दिखाऊंगा, ये सब next class में करेंगे अपन. I'm just showing you. In the next class, what we are going to do is this, guys. We are going to derive differentiation. We are going to derive how differentiation has come. How mathematically Newton actually derived differentiation. D by dx of x square is 2x. Q. Y is what we will do. Once we have done that, then we will start going into the theorems of differentiation. Product rule, addition rule, division rule, chain rule, पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन के डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. आफ्टर दैट वी विल डू इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, देन वी विल डू एरिया अंडर द कर्व, राइट? एंड देन वी विल अप्लाई ऑल दीज कंसेप्ट्स इन फिजिक्स. दिस इज अ शॉर्ट कोर्स. दिस इज नॉट फुल डिटेल्ड कोर्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. वो 12th की ऑनलाइन पाठशाला की क्लासेस में सेपरेटली चलेगा. दिस कोर्स इज डिजाइंड, आई हैव डिजाइंड दिस कोर्स स्पेशली फॉर 11th स्टूडेंट्स हु नीड टू अंडरस्टैंड कैलकुलस टू मास्टर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ. इफ यू आर इन क्लास 10th, सुपर. इफ यू कैन लर्न कैलकुलस इन क्लास 10th, माइंड ब्लोइंग. ठीक है? इफ यू आर इन द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th और अ ड्रॉपर स्टूडेंट, देन ये बेसिक कंसेप्ट आपका आना चाहिए. ठीक है? The calculation part that we will do might sound a bit basic for you. ठीक है? So use your time accordingly. चलो guys, see you again in my next class. In the meanwhile, do like if you understood the concept today. Do share with your friends who you feel can benefit from it. And do subscribe by clicking on the bell icon. And in the end, what I always say guys is this. ये है मेरा favorite graph y equal to x square. ठीक है? This is y equal to x square. Keep this graph on your face always and keep smiling. See you. Bye-bye in my next class. Happy Sunday to you.